बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में शमासा रहमान और आप देख रहे हैं तज्जिया। हमेशा की तरह तज्जिया तब्दीली का। तब्दीली तो ये होगी कि एक जो हम लोग कह सकते हैं यूएन ने यमन और तुर्की ने जॉइंटली एक रेजोल्यूशन मूव किया विच सेड दैट जो डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट ट्रंप की जो यूनिलैटरल अमेरिका की एक्सेप्टेंस है जेरूसलम का एज द कैपिटल ऑफ इजराइल, इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया। 128 members have voted against this. That is a fair amount. इसमें मैं ये बताती चलूँ कि जब ये रेजोल्यूशन पेश हुआ हमने देखा कि अमेरिका की तरफ से निकी हेली द यूएस एम्बेसडर टू द यूएन ने वेरी क्लियर वर्ड ये कहा कि वो मुल्क जो इस रेजोल्यूशन के खिलाफ जो है वो नहीं वोट करेंगे वो दे आर डिसरिस्पेक्टिंग द यूएस। इसके आगे जाके हमने स्टेटमेंट यूएस एडमिनिस्ट्रेशन से ये भी सुनी कि क्योंकि यूएस यूएन को इतने पैसे देता है कि इट इज अंडरस्टूड कि द यूएन विल साइड विद द यूएस फॉर्चुनेटली फॉर अस एंड अनफॉर्चुनेटली फॉर द यूएस। ऐसा नहीं हुआ। मुल्क होने निकल के clearly aside from 8 countries have said कि they do not accept Jerusalem as the capital of Israel. इसमें इजराइल का हमने बड़ी क्लियर स्टांस देखा है। they have refused to comment। इन्होंने कहा है कि they reject this। इंटरेस्टिंग सिचुएशन बन रही है और इसमें एक लॉन्ग टर्म विजन जो आप लोग अपने जहन में रखें और ये जरूर सोचिएगा कि ये जो रेजोल्यूशन हमारे सामने आया है जिसको बेशुमार ममालिक ने कहा है that they accepted, they do not accept the existence of Jerusalem as the capital of Israel। इसमें एक बड़ा अहम इंडिकेटर है। वो इंडिकेटर ये है कि अब वक्त आ गया है कि बहुत गहरी नजर के साथ जो प्रेसिडेंट ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी के हवाले से एक है रुख दुनिया का, उसको जरूर देखना चाहिए बिकॉज ये बहुत ही नैरो है, लॉन्ग टर्म नहीं है और इसमें हमें कोई सच प्रोफाउंड सोच नहीं नजर आ रही है। हम गुफ्तगू अपने स्टूडियो में आज करेंगे। हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं रिटायर्ड एयर मार्शल रियाजुद्दीन शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफी सालिक मजीद साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया सालिक साहब। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं रिटायर्ड कर्नल रिजवान अहमद साहब। Assalamualaikum ji, thank you very much. I will come to you as always, Sheikh, being the senior person. लोगों को पता है, एक्सप्लेन कर दिया इंट्रोडक्शन में कि हुआ क्या है। जो की पॉइंट जो हमें से नजर आ रहा है इट्स ट्रम्प शॉर्ट साइटेड फॉरेन पॉलिसी एंड स्पेशली ऐसे इशू की तरफ। तो अब तो लोगों को एहसास हो जाना चाहिए है पूरी दुनिया में कि द विजन द इंटेलिजेंस दैट इज रिक्वायर्ड ऑफ यूएस प्रेसिडेंट क्लियरली वो ट्रंप में नहीं है। तो अब हर मुल्क को अपने बारे में बहुत गहरी नजर से सोचना चाहिए। बिल्कुल सही आपका कहना। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड जरूर ये है कि ट्रंप इज नॉट द फर्स्ट प्रेसिडेंट जिसने अपनी इलेक्शन कैंपेन में कहा था कि मैं ये करूंगा। एब्सोल्युटली ट्रू। ओबामा सारे पिछले 5 प्रेसिडेंट्स ये कहते आए हैं मगर किसी ने किया नहीं था, मगर उनका सारा कैंपेन के अंदर वो ये कहते आए हैं। ये इज कॉन्ट्री टू द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन। सिक्योरिटी काउंसिल 1967 के रेजोल्यूशन में कहा था कि ये जेरूसलम का जो माहदा है वो इंक्लूड म्यूचुअली बिटवीन इजराइलीज एंड द पैलेस्टीनियंस विल टेक प्लेस एंड कोई इस तरह की यूनिलेटरल चीज नहीं की जाएगी। तो जो आप देख रही है इट्स नॉन बाइंडिंग जो अभी आपका यूनाइटेड नेशंस का असेंबली का रेजोल्यूशन है, इट्स नॉट अ रेजोल्यूशन, इट इज वोटिंग फॉर और अगेंस्ट इट। इसके अंदर जो एब्सेंटेशन हुई है वो भी देखने वाली हैं। उसमें बोस्निया हर्ज़गोविना को खास करके देखेगा, उन्होंने भी एब्सटेन किया है। ये अगर आप देखें तो एब्सटेन किया है बोस्निया की वजह मैं आपको बताऊँ इसलिए मैंने कहा कि बोस्निया इज वन ऑफ द कंट्रीज विच इज अ मेजॉरिटी मुस्लिम कंट्री। और उन्होंने क्यों किया है क्योंकि जब एवरीथिंग वाज रियली डाउन फॉर देम इट वाज ओनली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दैट केम टू देयर सेविंग। तो इसके अंदर बहुत सारी और चीजें हैं। आप अगर जेरूसलम की सारी हिस्ट्री भी देखिएगा ना, जेरूसलम इज डिवाइडेड टू 4 quarters. There is the Armenian, there is the Jew, there is the Muslim, there is the Christian. ये 4 quarters and it's got a population of about like 0.9 million, of which 35% are Muslims, 64% are Jews and about 2% are the others. तो basic composition इसकी ये है। इसके अंदर 1948 में the first time that is when the Israelis took from the Palestinians West Jerusalem.
Eastern Jerusalem was with them till in between this period of 67 and 48. In between, you may not or may know, Jordan had taken over from Palestinians Jerusalem. Jerusalem they had taken from Palestinians. Then, of course, 1967 में both the sides were taken by the Israelis, and since then they have been. ابھی اسرائیلیز کا کہنا یہ ہے, ناصر یاہو نے جب کہا نا کہ دس از گوئنگ ٹو بی null and void, and he did it before the voting there. وہ اس لیے کہا کہ he knew what was going to be happening there. He knew it would be overwhelmingly supported, and there will be very few people who will be against, and probably not very many abstention. اس کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے 70 سال لگا ہے, Americans have come around to putting their embassy there. اگلے 70 سال میں باقی بھی لوگ آ جائیں گے. So what is the principle that he is looking at and following, which has been a cardinal principle ساری دنیا میں یہ چلتا رہا ہے, it is the strong who decides what is the rule and what is the law, and what portion of law and rules are going to be applied. This is what has been happening since time immemorial. یہ کہتے ہیں نا کہ history is written by the victors and the vanquished point of view is never known. یہ چیزیں ہوتی ہیں. ابھی آپ نے بالکل دیکھا, it's a very good moral victory, but in reality it is non binding. ہوگا یہی کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم ایک پھر دوسرا پھر تیسرا اس کے اندر ہوتے جائے. اس کے اندر آپ کو ایک چیز اور دیکھے گا, آپ یورپین یونین, موسٹ آف دا یورپین یونین کنٹریز ہیو ووٹڈ in favor of this. There are just a handful of them who are not. Right. So, and most of those which are from East European countries. Eastern European countries. So that was 22 of the 28. جی 28 میں سے 22 یورپین ممالک نے ووٹ کیا ہے. پولینڈ نے نہیں کیا. Czechoslovakia, Republic of Czechoslovakia, and Eastern European, Romania. You will get all the names, but I don't think your viewers will be interested in knowing that. They want to try. Principally یہ ہے کہ this is East European countries have now have recently joined, and they are in many ways greater beneficiaries of the United States because they have just come out of the influence of the Soviet Union or Russia. تو اب اس میں تھوڑا سا اضافہ یہ بھی کر دیں کہ US ایڈمنسٹریشن نے کہا تھا کہ جو ملک ہماری حمایت نہیں کریں گے, they should understand کہ جو US ایڈ جاری ہے ان کو اس میں کمی بھی آئے گی. سب سے بڑا ایڈ ایجپٹ میں تو پھر بھی ایجپٹ نے کیا ہے, افغانستان نے بھی ووٹ کیا. تو پھر ایسٹرن یورپین کنٹریز, یورپین کنٹریز میں نے جیسے کہا نا کہ they just come out of influence of one and come into the second one. They don't want to get into that books of that. So they want to stay in the neutral ground by abstain. They abstain. And those who have voted, by the way, اس کے اندر بھی آپ دیکھیے گا, there is most of them are Latin American or South American who have voted in favor. جنہوں نے فیور میں کیا ہے نا, وہ آپ ان میں دیکھیے گا کہ وہ اسٹیٹس ہیں جو کوفا کی ہیں. کوفا از آرگنائزیشن ایسوسیشن آف ساؤتھ امریکن اسٹیٹس, آئلینڈ اسٹیٹس ہے یہ, جس کو Americans are supposed to be giving them certain preferential treatment, and they are supposed to get certain security also from them. So the people who have voted against this have been those which are great beneficiaries, not necessarily that of Mexico, Colombia. They have abstained. Abstained. Yes, they have abstained. The ones that have voted, I would believe, Bahamas. Bahamas ہے. آپ دیکھیں گے اسرائیل, امریکہ اور کے علاوہ جو ہے نا وہ ہے یہ 4 وہ اسٹیٹس ہیں جو آپ کے لیٹن امریکہ کے. Analyzing the countries جنہوں نے نہیں ووٹ کیا, what is the reason behind abstaining from the vote? But it's a very interesting story. Not a story, it's a historical fact جو میں نے recently ہی پڑھا تھا. I believe کہ گرناڈا کے فال کے بعد the king of Grenada. This is how I see this. جو آپ نے ذکر کیا شروع میں, اور آپ لوگ بھی جانتے ہو, خود بھی سنی all the US presidents جنہوں نے اپنی الیکشن کیمپیننگ کے دوران کہا کہ we will recognize the state of Jerusalem, Amira embassy. But they didn't. اس پہ the reaction of the Muslim world جو آپ نے کہا کہ ابھی تک آپ کو نظر نہیں آ رہا, نہ شاید انشاءاللہ آئے, امید کی دنیا قائم ہے. وہ یہ تھا کہ after the fall of Grenada, as وہ نکل کے I think مڑ کے دیکھ کے وہ رو رہے تھے کہ ان کا کنگڈم ان کا چلا گیا, تو میری مدر, ان کی والدہ نے مڑ کے یہ کہا کہ عورتوں کی طرح کیوں رو رہے ہو اس چیز کے لیے جو مردوں کی طرح جس کا دفاع تم نہیں کرتا ہے. So that seems to sum up our situation very well right now. The Palestine moving on to these 30 countries who abstained. کچھ حیران تو میرے لیے تو ایک ملک ہے, کینیڈا. Justin Trudeau, جس کو ہم لوگ کہتے ہیں human rights, that is the perception جس کو چیمپئن کیا جا رہا ہے.
if nothing else, religion को आप एक तरफ छोड़ दें, Jerusalem is a place जिसको contest किया गया है, not just by the Muslims, not just by the 7 things, but there's a Christian community as well. As you mentioned, they have the Armenian. Canada, for it not to vote, वो थोड़ा हैरान कौन है? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया अशमा साहब का पीटीवी का, जिसमें अशमा साहब ने बात की, बड़ी अच्छी तरीके से उन्होंने जो इसका पस मंजर है वो तो समझाने की कोशिश की है उसको, ताकि समझ में आए कि हुआ क्या है और क्यों ये लोग जो है वो वोट देने के लिए आए या जिन्होंने नहीं दिया जो एब्सटेन कर गए। लेकिन कनाडा का तो आपने बिल्कुल अच्छा जिक्र कर दिया कि कनाडा क्यों इसमें से निकल गया, क्यों नहीं आया। हम तो समझ रहे थे कि उनके प्राइम मिनिस्टर जो है वो इतना पॉपुलर है और वो प्रिंसिपल के साथ जाएगा, और वो बड़ा बोल्डली वो एक्ट करता रहा, और ये मौका था जिसपे कनाडा जो है वो आके लीड करता है दुनिया को, भाई एक नया लीडर मिलता है उसको कि हाँ भाई ये प्रिंसिपल के साथ खड़ा है। लेकिन उन्होंने डिप्लोमेटिकली हैंडल किया। जाहिर है कि उनके इश्यूज हैं अमेरिका के साथ, वो नहीं चाहते कि कन्फ्रंटेशन में जाएं। जाहिर है जो लोग इस वक्त एक्सटेंड कर गए हैं उन्होंने खुद को कन्फ्रंटेशन से बचाया है, और जो लोग इसके अगेंस्ट गए हैं वो प्रिंसिपल के साथ आए हैं खुल के। उन्होंने कहा कि जी हम तो जो रेजोल्यूशन पास हुई हैं 67 से लेकर अब तक हम उनके साथ हैं, वो बाइंडिंग है या नहीं है, लेकिन मॉरली उनके साथ खड़ा होना ही प्रिंसिपल्स की विक्ट्री होती है। और उसमें उन्होंने शो किया, उनकी लीडरशिप को क्रेडिट जाता है। जो भी आए हैं 128 मुल्क अगर आपको वोट दे रहे हैं आउट ऑफ 172 कंट्रीज, तो ये जाहिर है कि इससे रुझान पता चलता है कि ट्रंप का जो लबो लहजा रहा है दुनिया के साथ उसको लोग कितना नापसंद कर रहे हैं या कितना उसको अगेंस्ट भी देख रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान समेत जिन लोगों ने इसको वोट किया है या जो लोग इसके को स्पॉन्सर हैं उनको आने वाले दिनों में अब सख्त माहौल देखने के लिए तैयार रहना चाहिए। आगे हो तो पाकिस्तान की लीडरशिप जो है वो इसके लिए तैयार है पहले से ही। हम तो डू मोर पता नहीं कब से सुनते आ रहे हैं और कब से जो है वो इसको फेस करते आ रहे हैं। मतलब 9/11 के बाद से जो फेस द म्यूजिक हमने सूरत का सामना किया, इसलिए नहीं किया। तो हमारे लिए कोई ऐसी नई बात नहीं, कोई चैलेंजिंग पोजीशन नहीं है। हमने तो अफगानिस्तान के दौर में अफगान जहाज के बाद भी हमने देखा था, F-16 की पाबंदियां भी हमने देखी थी, उसके अफगान जहाज के जो है रिएक्शन भी देखे थे। उसके बाद हमने एटमी धमाके करने के बाद भी देख लिया था कि दुनिया ने हमारे साथ क्या रवैया अख्तियार किया था। तो हमें कोई बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमारे फाइनेंशियल इश्यूज हैं, हमारे बहुत सारे लोन्स के साथ मामला हैं, अमेरिका के साथ हमारी एड है, ट्रेड है। हम चाहते हैं कि भाई ट्रेड बढ़े और एड न रहे, लेकिन अब आने वाले दिनों के लिए मुश्किलात होंगी जिसके लिए थोड़ा तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है जी, आप अपना सर चला रहे थे। नहीं, मैं इनफैक्ट इतनी डिटेल डेलिवेट बातें हो चुकी है, आपने अपने भाइयों में भी और मास्टर साहब ने भी इसको काफी रिपीट किया। मैं इसको थोड़ा सा डिस्ट्रक्शन ला के 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर लाना चाहता हूँ नागरिकों के लिए। खुश निकी हैली जो यूनाइटेड नेशंस का एम्बेसडर ऑपरेट कर रही है यूनाइटेड स्टेट्स की, बेसिकली ये एक तरफ इंडियन ओरिजिन की, इनका असल नाम है निम्रता रंधावा, और ये इंडियन ओरिजिन की सेकंड जो है इंडियन अमेरिकन है, जो कि इससे पहले जो गवर्नर के स्टेटस पे पहुंची, और इस वक्त ये यूएन के अंदर जो है एज ए एम्बेसडर ऑपरेट कर रही है। और इनके बारे में कहा यह जा रहा था कि ये फॉर द हिस्ट्री में फॉर द फर्स्ट टाइम शी इज द मोस्ट वोकल काइंड ऑफ अ लेडी हु इज देयर रिप्रेजेंटिंग द अमेरिका इन यूनाइटेड नेशंस। और इस वाक्य से पहले, इस डिप्लोमेटिक डिफीट से पहले, मतलब इतनी पैथेटिक डिफीट शायद अमेरिका को हिस्ट्री में पहले रिसीव नहीं हुई होगी जो इनकी वजह से हुई है। एंड शी वाज वन अमंग द मोस्ट वोकल ऑफ ओवर देयर, और इंडियन अमेरिकन ओरिजिन की वहां जा रही थी। इससे पहले की जो नॉर्थ कोरिया का इशू है तो उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा वोकल थी कि इनके खिलाफ जो है ना हमें मिलिट्री स्ट्राइक्स के साथ जाना चाहिए। एंड इट वाज जस्ट काइंड ऑफ कहना चाहिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज के चारा में इसको थोड़ा मिटिगेट करा के उसको ऑफर किया, अदरवाइज यू आर अगेन द होल वर्ल्ड वाज मूविंग इनटू अनदर काइंड ऑफ अ ग्लोबल क्राइसिस एंड ऑल। तो ये निकी हैली निम्रता रंधावा की भी एक डिफीट है। और मैं इसको अगेन डिस्ट्रक्शन का वर्ड मैंने यूज किया कि जो हमारे नेबरहुड में हमारा जो अगल से एक चला आ रहा है, पड़ोसी मुल्क एक दुश्मन है, और वो हमारा जब तक कि हमारी सेटलमेंट नहीं आ रही, तो ये उनकी भी एक इनडायरेक्ट बहुत बड़ी डिफीट है, बिकॉज दे हैव बीन एबल टू रीच टू द काइंड ऑफ अ लेवल कि जहां उनके देखिए मुसलमान को जो पाकिस्तानी को अभी तक जो है वो अमेरिका में जाके इंडियन पाकिस्तानी ओरिजिन अमेरिकन तो नहीं रिप्रेजेंट कर रहा किसी अमेरिका को इस लेवल में जाके, तो टेक्निकली स्पीकिंग इनडायरेक्टली ये इनकी भी डिफीट है। इन दिस रेजोल्यूशन इंडिया हैड अ डिफरेंट स्टैंड। ये तो ये चीज का अपना भी I agree voted for the Palestinians. I agree to this thing, this is saying, but they people as they are there in America think tank lobby में जो अमेरिका के गवर्न कर रहे हैं डिफरेंट पॉलिसी मेकिंग में, उसमें इंडियन ओरिजिन्स का एक बहुत बड़ा रोल है। तो हम लोग और वो पाकिस्तान को काउंटर करने में, कैनबलाइज करने में बहुत जगह दिस इज नॉट स्पेसिफिकली अ पाकिस्तान इशू, दिस इज a global issue. It is a global issue and it is a human rights issue. सेकंड चीज जो मैं डिस्ट्रैक्शन रिकॉर्ड नहीं करना चाह रहा हूँ वो ये कि ह्यूमन राइट्स का बहुत अच्छी आपने बात की, नथिंग टू डू विद पाकिस्तान। ह्यूमन राइट्स का एक इशू है बेसिकली जो है ना कि सोवरेनिटी और ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन चल रही है, लोगों ने दुनिया में इसको निगेट किया है। ठीक है,
This is the time for the Pakistan, I must say, that we must now take up the case to whatsoever is happening in our neighborhood, in Kashmir, through the Indians, जो वहाँ पे human rights का violation हो रहा है, we must bring it up back to this thing, और ये जो पूरी दुनिया के सामने प्लेटर बॉयल अप करके वहाँ पे चीज आ चुकी है. Getting that to go back to this area, Palestinian or Jerusalem. आपका point you're saying that this is a good opportunity. This is the Palestine when it is hot. आज का जो दुनिया में पूरा माहौल बन चुका है, दैट इज देयर. आपको लग रहा है कि बाकी माहौल बन चुका है? आई थिंक अभी इसको किस और तरीके से आप प्रूव करेंगे कि अगर इस पूरी स्टेट से जो है उसको नेगेट किया है, मतलब दे ऑल हैव यूनानिमसली एक्सेप्टेड इट, डिप्लोमेटिक डिफीट हो गई वहाँ पे. प्लस एक छोटी सी आपने बात की थी मुसलमानों से रिलेटेड. हमारे साथ फोन पे जी हमें मिस हिंद अल फयाज ज्वाइन कर रही हैं. शी इज अ मेंबर ऑफ द यूरोपियन पार्लियामेंट एंड शी इज वेरी शी इज ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट एज वेल. अस्सलाम वालेकुम. हेलो. Hello, Assalamu alaikum. Hello, Sahla. Hi. Hi, Mr. Ross, thank you for taking up the time to join us. I do realize we're in the midst of a protest. And since you are there on the ground and we're discussing the resolution that was passed in the UN, before we come to that, I'd really like to ask you, sitting over here in Pakistan, what is the reaction in Jordan? What is the reaction in the Arab world as far as this acceptance of Jerusalem of the US by moving their embassy there? We don't seem to be seeing the kind of anger and agitation that one would have expected after what President Trump did. What do you see on the ground? The Jordanian people in general, the Arab in general, they're very upset and furious because this decision was taken from one side, from Trump's side, disrespecting the history of Jerusalem, disrespecting the rights of the Palestinians and the Arabs. And many resolutions that the United Nations has been taken, it was underestimated from Trump's side. Now the Jordanian people for the last 16 days, they've been on an ongoing demonstration in front of the American embassy in Amman, of course. And that is to reflect, unfortunately, that is the most, the utmost that the Jordanian people can do regarding this decision. The Jordanian people are asking King Abdullah to open the borders for them because they're angry, and these decisions are expanding and escalating. And it's ongoing. Now they're starting with Jerusalem. We know that Israel, with the support and with the sponsor of America, they will not stand only on the Jerusalem borders. There's also the plan of ongoing. If you look at the Israeli flag, the two blue lines, it reflects from the river to the river. It will not stop only on the Jerusalem border. The plan is to go further north. So the Jordanian people are asking the King Hussein, King Abdullah, open the borders for us, and we take our rights and we support the Palestinian people. I would also like to ask you, after the resolution in the UN, Michael Owen, who is Israel's Deputy Minister for Diplomacy, has called for Israel to cut its ties with the UN and expel the organization from its Jerusalem offices. This is the reaction we're getting from the Israeli side. Do you feel that the appropriate action that is required from the leaders of the Arab world is equivalent to what's happening on the other side? Or is there much that is needed to be done on the leadership in the Muslim world? Unfortunately, all the resolutions that the United Nations has been taking that is pro the Arab demand, there's no action upon that. Now we know the decision that was taken yesterday at the United Nations, the Arab knows that the United Nations will take no action. No one can take any action against the Americans and the Israelis. And not to mention that Mr. Trump, he started threatening the Arab regime, threatening any country that will vote against this resolution or this decision. They will forbid them from the financial support. I would say
what the 128 countries did is something to be proud of, something, but we need a real action. We need action regarding this issue. Mr. Trump is insisting on moving the American embassy into Jerusalem to be recognized as the capital of Israel. And that is against the United Nations decision, against the vote of 128 countries. I have a final question for you, which is you're talking about people being agitated and not being at all happy with the decisions that have been taken. Do you feel that there is a disconnect between the sentiments of the population of the different Muslim countries and their leadership? Because there seems to be a huge disconnect in those leaders of the Muslim countries translating the sentiments of their population into actionable information. They all voted for what the people wanted, but we know that the Zionist and the American administration will not respect that vote, and this is the problem, because they take the decisions from one side. They think that because they're controlling the media and they're controlling the money, they can control our will and fight. Thank you very much, Ms. Faiz, for taking out the time and joining us. I do realize we were in the middle of a demonstration. I think गुफ्तगू कर रहे थे मिसिंग और फाइज से अमान जॉर्डन से गुफ्तगू करनी थी, वहाँ की हुकूमत का हिस्सा भी हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं, और वो ये कह रही थी कि मुस्लिम ममालिक में अमान की तरह भी जो है वो एहतजाज हो रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मीडिया है, जो पावर है, जो ताकत है, वो यूएस और इजराइल के साथ है। तो लेकिन इस केस में ये जरूर कहूँ कि लोग हमेशा कहते थे कि जो यूएन एक दफा कहते हैं वहाँ की अगर यूएन जो कहते थे अमेरिका की मुट्ठी में है, अब इस फैसले से तो ये नजर आता है एटलीस्ट कि ये चीज, ये परसेप्शन जो है वो इस वक्त के लिए तो रद्द हो चुका है। देखते रहिए और दूसरी आफ्टर शॉर्ट ब्रेक।
ویلکم بیک. جی گفتگو ہو رہی ہے اسٹوڈیو میں جیروسلم کے متعلق ریزولوشن جو پاس کیا گیا ہے ود 128 ممبرز ووٹنگ ان فیور ان دا UN اسمبلی. شیخ صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. مس ہند از کوائٹ ویل نون گلوبلی بیکاز یہ وہ خاتون ہے جن کا سارا CNN BBC اور اس پہ پتہ چلا تھا بیکاز ان ہر اون گورنمنٹ پارلیمنٹ ان کو کسی آدمی نے کہا تھا کہ آپ بیٹھ جائیں تو اس پہ ان کا ریئیکشن شیز اے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ اینڈ شیز آلسو ویری کلیئرلی سیڈ کہ جہاں پہ طاقت اور پیسے کا کھیل ہوتا ہے تو وہاں پہ لوگوں کی آوازیں دور تک نہیں پہنچتی. اب یہ تو ہم لوگ جانتے ہیں وی اویئر آف دس بٹ آئی اسٹل فیل کہ ڈسکنیکٹ ہے ہماری لیڈران میں اور ہمارے پاپولیشن کی امنگوں میں. اب جیسے کہ کہا کہ کشمیر کو اس سے ہم لوگ تھوڑا سا فائدہ اٹھا کے جوڑ لیں. کشمیری بیچارے ان کی تو رپورٹس ہمارے سامنے آ رہی ہیں, ہم اٹھا بھی رہے ہیں, لیکن اٹ سیمز آئی فیل کہ ہماری لیڈرشپ اس طرح کافی نہیں کر رہی اوور جس طرح ہونی چاہیے. بیکاز کافی کرنا مینز اینڈ ریزلٹ جو جیتا وہی سکندر, رائٹ؟ In one way, I think maybe Trump might be a good thing for the Muslim world. Right. It's been a long time. Muslims have been asleep and there has been disconnect. کہ لوگوں کی ایک اب تمنا ہے اور جو حکومتیں کر رہی ہیں وہ نہیں ہے. حکومتوں کو کیونکہ ایک تمنا ہی خالی نہیں, ریالٹیز کے ساتھ چلنا ہوتا ہے. آپ کی اپنی دیکھیے گا کہ آپ کی معاشی حالت کیسی ہے, آپ کی اپنی ایجوکیشن لیولس کیا ہے, آپ کی اسکل لیولس کیا ہے, آپ کی کنٹریبیوشن ٹو دا ورلڈ اکانومی کیا ہے. آپ بیسکلی مسلم 54 کنٹریز آپ نے کیا کیا چیزیں اس ہیومینٹی کو دی ہیں اوور دا لاسٹ 600 ایئرس. پہلے 600 سال کے اندر آپ نے بلکہ 800 سال کے اندر Muslims had a very big contribution. Not that we have gone now to fake it complete. کہ جو بھی ہوگا وہ تو اللہ کی رائے ہے, بالکل ہے, مگر اس میں آپ کا بھی کچھ ہوتا ہے کرنا. آپ خالی یہ بات کے یہ کرتے رہیں گے تو پھر آپ آگے نہیں بڑھیں گے. سوائے آئی تھنک ارجکان کے there is at the moment there is hardly anybody else that you can see on the horizon as far as the Muslim leadership is concerned. اور اس کو بھی کافی resistance آ رہی ہے from within the Muslim world. Within the Muslim world, within Turkey itself اور جگہوں سے بھی, مگر this is the historical fact کہ ہمیشہ یہ ہوگا there is never ever a champion of the world or champion of a particular community or ethnic group or religion who would be unchallenged. So challenges ہوں گے, but yet majority will recognize for whatever he is and whatever he may be able to deliver. ہمارے پاس بہت اشد ضرورت ہے خاص کر کے ہمارے اپنے ملک میں to emphasize on basic human development. Human development کے اوپر ہمارے اس وقت کہیں پہ بھی کوئی ایسے emphasis نہیں ہے جس میں ہونی چاہیے. آپ کی ایجوکیشن دیکھ لیجیے گا, آپ کی ہیلتھ سیکٹر میں دیکھیے گا, آپ کی اسکل لیول امپروومنٹ میں دیکھیے گا, آپ کے پاس کیوں اس وقت انڈسٹریز نہیں لگ رہی ہیں. وائی آر یو سیئنگ دیٹ باقی لوگ آپ کے اس وقت ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ جو ہیں FDI بہت تھوڑی ہو رہی ہے. اگر آپ کے اپنے لوگ نہیں کر رہے ہیں تو پھر دوسرے کیسے کریں گے؟ اگر آپ کے اپنے لوگ یہاں سے انڈسٹریز لے کے جا رہے ہیں بنگلہ دیش اور دوسری جگہوں پہ تو آپ کے لوگ تو دیکھیں اس میں مجھے شیخ صاحب ایسی مجھے استقبال نظر آتا ہے لانگ ٹرم ویژن کا. آپ نے جیروسلم کی تھوڑی بہت ہسٹری آپ نے اتنی تفصیل آپ ایک شو میں بیان کر سکتے تھے, آپ نے کی سارے صاحب. اگر ہم لوگ جیروسلم کی ہسٹری دیکھیں, جب اسرائیل کا اسٹیٹ جب انہوں نے برٹش نے کہا اور allied forces جب انہوں نے کہا تھا کہ ہم لوگ کریٹ کریں گے, ڈیوائڈ کریں گے, the division was I believe 50-something% for the Israelis, 47-48% for the Palestinians. Not Jerusalem. Jerusalem nahi. I'm talking about the land that was given to them. What we saw happen was because again it's no intervention nahi hota hai, because the Palestinians of that land were not Actually, the Israelis militarily took over Western Jerusalem. Right. But इसमें हम लोगों ने the rising force at that time were or the declining force. But एक force जो थी वो Ottoman Empire, and because the Palestinians during that time had sided with the colonial powers. उसमें भी मैं एक जिस point को मैं इन example से देना चाह रही हूँ कि जहाँ जहाँ इजरायलियों को जो है वो मौका नजर आया, they kept making their ingress. Until to the fact ابھی آپ نے جب ذکر کیا شیخ صاحب شروع میں کہ جیروسلم کی پاپولیشن کا جب آپ نے بریک ڈاؤن دیا percentage wise, یہ percentage wise تب وہ بریک ڈاؤن نہیں تھا. This has been through squeezing out the Palestinians جو وہاں پہ رہتے ہیں, جو وہاں پہ پیدا ہوئے ہیں لیکن جن کے پاس citizenship نہیں ہے. This has been by pulling in Jewish settlers, giving them land. تو میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ
we are against what they are doing. But جس طرح وہ سسٹمیٹکلی اگر آپ دیکھیں جیسے نتنیاہو نے 70 سال سے وہ کرے چلے آ رہے ہیں اور ابھی جو سافٹ اوپننگ ہوئی ہے they have continuity and they have vision. ہمیں یہاں پہ طالب صاحب نظر آتا ہے کہ چاہے وہ کوئی بھی مسلمان ملک ہو ایک کنٹینیوٹی کے ساتھ ایک اس پہ ہم لوگ اپنا فائدہ دیکھتے ہوئے بیکاز حالات بدلتے ہیں. We are not able to do that. You must not see it in the Muslim context. Okay. Because this is the context, this is actually when 128 countries have voted for this based on basically on humanitarian and the right, that what is actually right and what is wrong. It's not been for... I'm not talking about this particular voting. I just said that basically... No, absolutely. It's me, you have countries that have voted on humanity. یہ تو بڑی عظیم بات ہے اور ہونا بھی چاہیے. اس پہ میں کہہ رہی ہوں کہ کیونکہ یہاں پہ ہم لوگ کہتے ہیں OIC کا ہنگامی اجلاس بلواؤ مسلم بردرہڈ, تو وہ کدھر ہے ہماری کنٹینیوٹی؟ اس میں 2-3 چیزیں ہیں جو ہائی لائٹ ہونی چاہیے. ظاہر ہے کہ اس پہ بحث ہوگی بھی آنے والے دنوں میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ 128 ملکوں نے بہرحال جو عدم اعتماد کر دیا امریکن پالیسیز کے اوپر, تو یہ پہلی دفعہ ایک بڑی پیش رفت ہے دنیا کے سامنے. UN کا جنرل اسمبلی کا ایک وہ رول سامنے آیا ہے جس کے اوپر کانفیڈینس شیٹر ہوتا جا رہا تھا اور لوگ کہتے تھے کہ UN جو ہے وہ اب ایک irrelevant باڈی ہوتی جا رہی ہے اور یہ پپٹ ہے یا یہ طاقت کے طور پہ اس کو مولڈ کر لیتے ہیں. تو پہلی دفعہ اس کا یہ قرض دوبارہ اٹھا ہے اور لوگوں کا اعتماد اس پہ بحال ہوگا. اس سے فائدہ بھی ہوگا اور پاکستان جیسے ملکوں کے لیے بہت الارمنگ سچویشن ہو جائے گی. الارمنگ میں اس معنی میں کہہ رہا ہوں کہ اب آپ جب کہتے ہیں کہ جی UN جو ہے وہ طاقتور باڈی ہو گئی ہے اور وہ بڑی بڑی سپر پاورز کے سامنے بھی کھڑی ہو رہی ہے اور ان کی مخالفت ہو رہی ہے وہاں پہ, تو اب تک آپ کہتے تھے کہ کشمیر کے حوالے سے جب بھی ہم کوئی معاملہ لے کر جاتے ہیں یا اس طرح کے مسلمانوں کے ایشوز جاتے ہیں تو دنیا بائسڈ ہے مسلمانوں کے ساتھ, اس لیے وہاں پہ وہ فیصلے نہیں ہو پاتے. تو یہ ایک فیصلہ انہوں نے ایک ایسی مثال بنا دیا ہے کہ آئندہ جب اس طرح کی کوئی آپ موشن کوئی ریزولوشن لے کر جائیں گے تو آپ سمپلی یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ جی دنیا ہمارے ساتھ باعث ہے اور اس لیے مسلمانوں کو انہوں نے نیگیٹ کرنا شروع کر دیا ہے. تو کشمیر کے معاملے پر آنے والے دنوں میں اگر کوئی ریزولوشن قومی اس میں جنرل اسمبلی میں جاتی ہے تو پاکستان کو بہت زیادہ ہوم ورک کے ساتھ اور پاکستان کے دیگر اسلامی ملکوں کے ساتھ بہت زیادہ کوآرڈینیشن کے ساتھ اس معاملے کو وہاں پہ اٹھانا پڑے گا. اور یہ نہیں کہا جا سکے گا کہ جی اب دنیا جو ہے وہ میرٹ پہ فیصلے نہیں کر رہی یا پرنسپل کے ساتھ نہیں کھڑی. اب تو مثال موجود ہے کہ فلسطین کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں اور انہوں نے وہاں پہ فلسطین کا مقدمہ ریزولوشن کے مطابق 67 کے ریزولوشن کے مطابق انہوں نے لڑا ہے اور امریکہ جیسی طاقت کو وہاں شکست ہوئی ہے. تو پاکستان کے لیے کشمیر کے پرسپیکٹو میں جیسا کنول صاحب نے کہا تھا ٹھیک ہے وہ بھی گیا ہے, لیکن مطلب بڑی طاقت تو اس میں اسرائیل نہیں ہے. امریکہ کو اگر شکست ہو رہی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کو بھی شکست ہو رہی ہے. تیسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان میں اب جس میں آپ نے کہا تھا اسلامی ملکوں کی قیادت عوام کے مطابق نہیں ہے, تو بھائی یہ اگر ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے آپ کا لیڈرشپ کا اور عوام کا, تو یہ کس نے دور کرنا ہے؟ یہ کسی مغربی طاقت نے آ کر دور نہیں کرنا ہے کہ وہ آ کے آپ کے حکمرانوں کو بدلے گا یا آپ کے حکمرانوں کے رویے کو بدلے گا کہ وہ کہے کہ آپ کے عوامی مانگوں کے مطابق آپ کے حکمران کام نہیں کر رہے. یہ تو آپ کی اپنی پبلک نے بدلنا ہے. اگر آپ کے پاس مواقع ہیں تو پھر آپ اپنے حکمرانوں کو بدلیے یا ان پہ اتنا پریشر ڈالیے کہ وہ آپ کی عوامی مانگوں کے مطابق دنیا میں جا کر بات کر سکیں. صرف پاکستان کی بات نہیں ہو رہی ہے, ساری دنیا میں مسلمان ملکوں کی بات ہو رہی ہے اور اس میں ریئلائزیشن ہے کہ بہت سارے اسلامی ملکوں میں اس چیز کی جو ہے وہ کمی پائی جاتی ہے. فقدان ہے, جس میں آپ نے کہا کہ طیب اردوان اکیلا لگا ہوا ہے, باقی کوئی ملک میں اس طرح کی لیڈرشپ نظر نہیں آ رہی. تو اس طرح کی لیڈرشپ اگر نظر نہیں آ رہی یا ان کو مسلط کر دیا گیا ان کے اوپر, تو اس میں عالمی قوتوں کے بہت سارے مفادات تھے جن کے تحت یہ حکمران ہمارے اوپر مسلط رہے ہیں مختلف ملکوں میں. تو ہمیں اس پر زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے. I think everyone सामने थोड़ी और हिम्मत इसलिए भी होगी because he has survived through a possible mutiny, quite honestly. اچھا میں تھوڑا سا آپ کے جو کہ یہودیوں کا یا جوش کا آپ نے کنٹینیوٹی کی بات کی ہے اور مسلمانوں کا آپ نے جو لیک لسٹر کی بات کی ہے کہ وہاں یونٹی نہیں, میں تھوڑا اس کے اوپر کچھ کہنا چاہوں گا. دیکھیں لیٹس سی کوٹ ہولی بک میں ہے, قرآن میں لئیس الانسان ماسا, لئیس الانسان مسلمین نہیں ہے. جس نے صحیح کی ہم نے اس کو عطا کیا کوشش کی. اگر جیوز کوشش کر رہے ہیں تو ان کو مل رہا ہے. اور اس سے بھی ریلیٹڈ دوسری چیز میں آپ کو یہ کوٹ کر دوں, نتھنگ ٹو ڈو ود اسرائیل.
जिस दुनिया में इस वक्त हम रह रहे हैं तो दिस इज थर्ड और फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर का भी कॉन्सेप्ट है, जिसमें इकोनॉमिक वॉरफेयर जो है सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट है। और इकोनॉमिक वॉरफेयर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें ग्लोबल जो दुनिया की जो वेल्थ है इट रन्स इन ट्रिलियंस ऑफ डॉलर, जिसका 90% से प्लस का जो सेगमेंट है ना इट इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय द ज्यूइश कम्युनिटी अक्रॉस वर्ल्ड। दिस इज डॉक्यूमेंटेड स्टैटिस्टिकल है, किसी भी जगह पर इंफॉर्मेशन इसमें जाके आप इसको कर लेंगे। होल फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड विच कंट्रोल्स द इकोनॉमी ऑफ द ग्लोब इट इज बीइंग रन एंड गवर्न बाय द ज्यूइश कम्युनिटी। तो उनकी जो असर्शन है इट इज अक्रॉस द वर्ल्ड, नंबर वन। नंबर टू, जो मुसलमानों की भी बात हो रही है बार बार स्टेट्स की कि हम क्यों नहीं कुछ कर पा रहे, इसके अंदर दो चीजें इसको सेपरेट प्रोग्राम किया जा सकता है। दो टर्म्स यहाँ पे कॉइन करना चाह रहा हूँ नाज़रीन के लिए, इसको याद कर लीजिए। देयर इज समथिंग विच इज नोन एज द पॉलिटिकल इस्लाम, जिसको लीड कर रहे हैं अर्दोगान टर्किश कम्युनिटी और डिफरेंट 2-3 मुस्लिम स्टेट्स वहां पर और भी है। और दूसरा जो पॉलिटिकल इस्लाम के अगेंस्ट में दूसरा सिस्टम है दैट इज द मोनार्की इन द किंगडम। द मोनार्की और किंगडम जो कि थ्रू आउट सिंस एजेस वहां पर रहा आफ्टर जी अरब इजराइल वॉर एंड ऑल, और जो हमने देखा भी लेटेस्ट जो भी आखिरी अरब स्प्रिंग के अंदर जो बहुत ज्यादा ट्यूनीशिया गया, लीबिया गया, जब गया किंगडम वहां पर 3-3, 4-4 डेकेड से रूल कर रही थी, वो खत्म हो गई, एबॉलिश हो गई। मैं पॉइंट इसमें हाईलाइट ये करना चाह रहा हूं कि एक इवोल्यूशन चल रही है और जो पॉलिटिकल इस्लाम है इट इज इमर्जिंग एज अनदर स्ट्रेंथ जो कि मोनार्की के साथ अब उसके अंदर स्ट्राइक चल रही है। आपने इसको डिमार्केट कर दिया बिटवीन पॉलिटिकल एंड मोनार्की। देयर इज अ प्रॉब्लम दैट आई हैव विद दिस, बिकॉज़ हमने जो क्या कहते हैं पॉलिटिकल दिस इज इवॉल्विंग, हमने जो पॉलिटिकल इस्लाम क्रिएटेड गवर्नमेंट्स भी देखी है, दे वर द फर्स्ट वंस टू फॉल। इफ यू लुक एट इराक इट फेल because it really wasn't following a political Islam system. मतलब वो फल तो जो उसके साथ इराक के साथ हुआ है, मेरे ख्याल में तो इराक अगर जो है इंडेक्स के नंबर 1 में 5 लाख नफूस वहाँ पे आपने जो है ना मार दिए हैं वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के बाद। एक अमेरिका की इतनी बड़ी सुपर पावर ने चढ़ाई कर दी और बाद में उन्होंने डिक्लेयर किया। ये भी तो इजाफा करें there is not just a tussle between political Islam and the monarchy system of Islam. The monarchy system of Islam जो है वो ज्यादा बैक हुआ जा रहा है by the powers that be. You say so, but I take it that way that political Islam is the new term coined up over there, जो कि इसको लेके चल रही है, जो कि more rational है, जिसमें more public representation है, और it is more candid, और ये अर्दोगान उसी को एक शाखसाना है जो इसको वहां तक भी लेके गए हैं। पॉइंट में the countries which have political Islam are facing the most number of obstacles. ये भी तो मानेंगे ना? Okay, good. I take your words, but इसको लेकर आने की कोशिश कर रहा हूँ कि this is the evolution going on up over there. एक तरफ आप Jewish community को देख रही हैं, which is sustained over a period of time since centuries. मैं ये कह रहा हूँ कि there is a light at the end of the tunnel. हमें hopeless होने की जरूरत नहीं है। Muslim Islamic countries, yes, they are ineffective. They haven't been able to play the kind of a role which they should, with the kind of a resources that they had and they enjoyed since ages. But अब उसके बाद things are moving, evolution is going on there. Overnight plug and play solutions नहीं है. The world is moving in some other direction. बस इसी में बात हो रहा है चौबीस अमेरिका की डिफीट के साथ देखे जो ग्लोबलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट था, जो ग्लोबल हेगेमनी का कॉन्सेप्ट था, दुनिया में सुपर पावर्स का कॉन्सेप्ट था, वो भी अब एबॉलिश हो रहा है। नाउ रीजनल पावर्स का कॉन्सेप्ट आ रहा है। ग्लोबल हेगेमनी के साथ सुपर पावर जो है वो उसे पूरी दुनिया को रूल करने की अगेन दिस वन इज देयर। प्लस जो ट्रम्प जिस दिन इलेक्ट होकर अमेरिका में आ गए थे तो जब दुनिया ने इसको कहा था दिस इज द यूएस ब्रेक्सिट, बिकॉज ट्रम्प की जितनी भी जो बॉल गेम थी बार्गेन थी, जो कुछ उसकी कैंपेनिंग थी, दैट वाज अगेंस्ट जिसके डिप्लोमेटिक फेलियर्स की तरफ थी। वो दुनिया के साथ मिलने के लिए नहीं जा रहा था बल्कि डिसएंगेजमेंट की बात कर रहा था। उसके बावजूद ही वाज एबल टू विन द सीट ऑफ ओवर देयर। ग्लोबलाइजेशन नहीं, लेकिन सऊदी अरेबिया के साथ तो बहुत अच्छा एंगेज कर लिया। सऊदी अरेबिया के साथ तो उन्होंने उसको वेपन्स की सेल की है $10 बिलियन की money. Yes, money. So money ने तो यहाँ पे distribute the money to the world कि we will cut off our aids, will not give you the kind of funds that we are giving, but still the world went against. So we just what is the difference you have in this case? Egypt, second largest recipient of USAID. We tend to see this Saddam and Gaddafi as monarchies. They were never monarchies. Monarchies are all surviving, those which were there in the Muslim world. No, I didn't say they were monarchies. I said they were political systems which had a dictatorial trend. Dictatorial trends में भी 2-3 but उनको भी survive नहीं करने दिया ना? Different versions थे। उसके अंदर जो versions थे which were more aligned with the West, continued to exist. Those which were not, वो समझ रहे थे कि एक आ रहा है revolution in the Arab world, but that really never died. मगर हमें इसको we are taking this event to be a very large and something which is a vote of non-confidence against the Americans. Not so.
it is, if at all it is anything to say that Europeans were as it is upset with Trump. Most of the world was already upset, and Trump has had this defiant attitude all along. اور اس نے ابھی بھی جس طرح اس کا representative Harris talks there in the United Nations, it is the same. It is one of a defiant کہ آپ کریں, ضرور کریں, آپ کریں گے تو یہ. اور اس کے پیچھے even the Israelis have taken cue from there, and they are saying now, by the way, when 1947, when this partition took place of the Palestinian land and the Jews were given the land from the Palestine کا ٹکڑا تو اس میں سے بنا کے ان کو دیا, تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ Jerusalem is going to be a city run by the United Nations. True. United Nations is what is actually occupying one of the best places, or it's one of the oldest buildings there in Jerusalem. اور اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ now we should ask them to go away from here. Actually, what he said is exact quote unquote. اس نے کہا کہ Israel thanks President Trump for his unequivocal position in favor of Jerusalem and thanks the country. Sorry, I'm reading the wrong quote. The quote about leaving that, we must, this is again Michael Oren, the Israeli Deputy Minister for Diplomacy, انہوں نے کہا ہے, we must evict the UN from the scenic governor's house where it's bloated, SAD does nothing, and give this historic site to a school, a hospital, or best yet, a new US embassy. This is UN کا تو شروع میں کہا نا کہ these are all those things which we have lessons to learn from. Lessons to learn from is that we have a resolution on Kashmir which says that plebiscite is going to be held there and should be held there. Over the period of time, all these plebiscites, all these decisions get diluted and then take a different shape slowly and gradually. Abhi aapne West Bank mein dekha hoga, West Bank was occupied by them. There were supposed to be number of resolutions have been there کہ آپ اس کے اندر کوئی settlements نہیں کریں گے. Yes, they have erected a wall and they have got these people. Now, from Jordan cannot now go. Palestinians cannot enter the place which were they erected from. وہ اپنی زمین پہ اپنی جگہ پہ نہیں جا سکتے. Even in Jerusalem itself, there are nearly 400,000 Palestinians who do not have any existence as such on paper. They are there, but they are not there. ان کو ریکگنائز ہی نہیں کرتے. They are neither here or not there. This is past. If you have, you are going to do this, and that you have to be careful. You have got to make sure آپ کی جو basic past کی elements ہیں, economics is a very important one. No, but I have to say that Ahmed Saab has said that the UN resolution, انہوں نے کہا تو آپ اس کو کاؤنٹر کر, انہوں نے کہا کہ دیکھیں UN resolution shows کہ جہاں پر انہوں نے کہا ایڈ نہیں ہوگی, پیسے نہیں دیں گے, پھر بھی لوگوں نے بات کیا, باوجود کیا. So there was something in this case. آپ کہہ رہے ہیں the thing that united everybody was not to be pro-Palestinian, but was an anti-Trump vote. دیکھیے گا آپ کو اس میں آپ کو بتاؤں, یونائٹڈ نیشن میں ابھی سیکورٹی کاؤنسل کی ہوئی تھی جس میں ویٹو کیا تھا یونائٹڈ نیشن نے, یونائٹڈ اسٹیٹس نے, آن دا سیم ایشو. 14 to 1 ہو رہا تھا وہ 6 دسمبر کو ڈیٹ رائٹ. وہ سیکورٹی کاؤنسل, وہ سیکورٹی کاؤنسل کی جو ریزولوشن ہوتی ہے دوز آر بائنڈنگ. دس از اے نان بائنڈنگ ون. So this is what one can say is now moral pressure which is there if it is to be counted. If it is to be taken further. Moralities are something which over a period of time then start to change depending upon the circumstances. They don't become final. Funding سے related بھی میں کچھ چیز یوز کروں. ہاں ویری لٹل یہ ہے کہ کانگریس کے اندر بڑی پاس پروڈکٹیو ٹرمپ نے بلینس آف ڈالر جو کہ آلریڈی یہ اسٹیٹ میں گلوبلی جا رہے تھے اس کو اس نے وہاں سے کٹ آف کروا دیا ہے. اور جو ایلیمنٹ آف جو ابھی ڈیفینیٹلی آئی ایم ناٹ ریڈی ود دا کائنڈ آف اسٹیٹس ٹو ٹیل یو دیٹ, لیکن اس پہ دیر از اے بگ سلیش ان ٹو دیٹ. تو وہ جو پیسے کا جو ریل ٹیل تھی جس کو دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں کہ پاکستانی اور باقی سارے جو لوگ ہیں جو ابھی کہہ رہے ہیں ہمیں ایسے کر دیا اتنا گھبرائیں پہلے سے کٹ چکی ہے. تو بھی وہی ٹھیک ہے. ہاں بیٹھ کر کے بس سٹنلی پاکستان مطلب ہماری جو ڈیپینڈنس ہے وہ تو اچھا جو ہمارے پاس جو ایڈ آ رہی تھی جو کولیشن سپورٹ کے اندر جو ہم وارن ڈائریکٹ ایسا نہیں کرا رہے تھے. میں ماشاء صاحب کی جزوی باتوں کو جو ہے وہ انڈورس کروں گا لیکن اوور آل نہیں, کیونکہ دیکھیں دوبارہ ولن پھر کیوں گر گئی.
अगर यही सूरत है तो लोग भूल जाते हैं। रूस के पास इकोनॉमिकली वो खोखला हो चुका था। ठीक है, तो कल को क्या सूरत होगी हमें नहीं पता। सुपर पावर जो आज है इसकी कल को इकोनॉमिक पोजीशन क्या होगी, क्योंकि सोवियत यूनियन अगर टूट फूट सकता है तो कल को कोई भी सुपर पावर टूट फूट सकती है। इसलिए ये कहना जरूरी नहीं है कि ये आज उन्होंने बना लिया है तो ये अब दुनिया सारी इस तरफ चली जाएगी। नहीं, दुनिया आज भी 67 की रेजोल्यूशन के साथ खड़ी है और उन्होंने फलस्तीन का साथ दिया है। तो इसका मतलब है कि प्रिंसिपल अभी हैं, आपको अपना मुकदमा लड़ना आना चाहिए, आपकी लीडरशिप होनी चाहिए। अगर आपके पास पावर है, आप जाके दुनिया के सामने अपना मुकदमा पेश कर सकते हैं। तो बिल्कुल कश्मीर की रेजोल्यूशन मौजूद है। साउथ साउथ इंडिया से और अमेरिका से जो चाहे यहूदी कर लें या ईसाई कर लें, बिल्कुल चाहे। आप अगर मुकदमा लड़ना चाहते हैं प्रिंसिपल पे तो अपना होमवर्क करके जाएं, दुनिया आपके साथ देगी। ठीक है जी। अकबर अकलमान शख्स ने मुझसे कभी एक ही बात कही थी, उन्होंने कहा था कि आपकी पूरी जिंदगी, और मैं इसको थोड़ा एक्सपांड करूंगी कि ये जो कश्मीर के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं या हम लोग फलस्तीन के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं कि वी शुड गिव अप होप, हमें जो है वो तैयारी अपनी प्रॉपर रखनी चाहिए। क्योंकि कभी ना कभी जैसे जिक्र किया, क्या पता था कि रूस खोखला हो जाएगा, क्या पता था बर्लिन की वॉल गिर जाएगी। वी नेवर नो कि क्या सिचुएशन बनती है। इसलिए अपनी तरफ से कोशिश हमेशा करनी चाहिए, उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। बिकॉज यू नेवर नो योर एंटायर लाइफ, आपकी पूरी जिंदगी प्रिपरेशन है उस वक्त का जब आपको चांस मिले, और जब वो चांस मिले तो आप पूरी तरीके से तैयार रहो। हमेशा की तरह उम्मीद यही है कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान बेसिक तरह से जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग जी, अल्लाह हाफिज।